Hello and welcome to my channel, guys. So today we will discuss mathematics strategy for SSC and RRB aspirants. So let's continue. Basically math is divided into three parts. Maths को हम तीन parts में study करते हैं competitive point of view से. That is arithmetic maths, advanced maths, and the third part and the most important is calculation. Arithmetic, advanced, and then calculation. These three things is connected by a general principle, that is the principle of concept and practice. And what is this principle? These three things have only one thing in common, that is concept and then rigorous amount of practice. So let's identify these three topics in three different stages. Once you understood the language, आप क्वेश्चंस को इजीली निकाल ले जा सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉलेज. सो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ रही है तभी आप एप्लीकेशंस पे वर्क कर पाओगे, वरना रट करके आप क्वेश्चंस कितने देर तक कर पाओगे, फंस जाओगे कभी ना कभी. सो बेसिकली आपको अपना लैंग्वेज बिल्डअप करना है. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में ही पेपर को अटेम्प्ट करना एंड कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है. अगर आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो देन आपको रिगरस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस लगानी है ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं. वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. एंड वंस यू स्टार्ट हिटिंग दोज 10 out of 8 क्वेश्चंस you will get out there. Once you do it you will reach to next level, that is calculation. वो दो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे हैं वो कैलकुलेशंस की वजह से नहीं बन रहे हैं. एंड कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करने जाओ तो पेपर में एक एक क्वेश्चन 5 से 10 मिनट ले लेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन ना करके आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हो, डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हो, यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हो, डिविजिबिलिटी का यूज़ कर सकते हो. These are few techniques to eliminate questions. Once you get the right answer you can eliminate every option, right? अगर आप यहाँ ये तीन जगह फंस रहे हो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, दैट मीन्स नियरली इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम फ्रेम दैट यू हैव, देन आप लास्ट ऑप्शन नीड टू लगा सकते हो. ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आप सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस को हटाते हो. एंड कॉमन बेसिकली एक रीजनिंग का अप्रोच है जो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में यूज़ कर सकते हो. ये रीजनिंग कॉन्सेप्ट है जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो. ये लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन है. सो वंस यू गेट ओवर दैट अरिथमेटिक पार्ट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एडवांस मैथ्स. एडवांस मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक है. वंस यू गेट हिट विद द राइट अमाउंट ऑफ लैंग्वेज इन ज्योमेट्री, once you understand the level of question, once you understand figure drawing and basic mensuration formula, you can take it easily. But when it comes to geometry you can do it, but not in trigonometry and algebra. These are formula based chapters. इनमें आपको formulas की बेहतर स्टडी करनी पड़ेगी एंड इट्स के एप्लीकेशंस. सो टीयर 1 की अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 2 marks per question, 50 marks you can get out there. वही 0.5 marks negative marking भी होती है. So seeing the level of the question you can easily get 20 questions correct within the time frame, but those 5 questions you will face 3 questions of extreme calculation where you have to use your basic mental sense and option elimination technique, and rest 2 question के लिए आपको डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ये 2 क्वेश्चंस अगर आप विद इन पर क्वेश्चन 2 मिनट पे लेते हो देन यू आर इन द राइट ट्रैक. सो फॉर एडवांस मैथ्स आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा में अच्छा पकड़ बनाना होगा. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन आजकल कॉन्सेप्चुअल आने लगी है, नॉट ऑन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड आने लगेंगे. जैसे कि रेडियस को अगर 2x कर दिया जाए तो डायमीटर में क्या असर होगा, या एरिया में या वॉल्यूम में क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो अगर आप ये दोनों चीज़ अरिथमेटिक एडवांस मैथ्स को ले जाते हो देन आप थर्ड पार्ट में अटकोगे जो है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के लिए आपको रोज़ रिगरस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस लगाने होंगे. प्रैक्टिस इन द सेंस
आप प्रैक्टिस कर सकते हो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस with unlimited visualization, right? How can we do that? How is it possible to do it? Let's see this. For calculation, you need to have certain practice on some topics like finding square and cube of certain numbers. Like आपको square याद होने चाहिए 1 to 50. And not just to remember them, but to remember that through thought. I mean, you can also remember it via some techniques, like you have to basically remember 1 to 10, and then you can use unit digit 5 based trick. That means if you want 15 ka square, then you can take 5 ka square 25, and then 1 multiplied by 2, 1 plus 1, that means 1 into 2, 225. Now if we take 25 ka square, then 5 ka square 25, and then 2 plus 1, 2 multiplied by plus 1, that means 2 cross 3, 625. If we take 35 ka square, then 25, and 4 cross 3 cross 4, that means 12, 1225. If we need 45 ka square, that means 25, and then 44 cross 5, 2025. These are basic general tricks that you have to apply, and in cubes there are no shortcut. You have to remember cube at least till 15, but you can do it 25 easily. Once you reach there, you can easily tackle mathematics calculation based questions based on square and cube. Once you master this, then you have to master addition and subtraction with limited amount of questions. Addition and subtraction, these are basic but most essential part. You can take a random 2-digit number, a simple page every day, and do a random calculation like 25, 45 cross 95, 49 cross 69, 45 plus 65. If I'm talking to do 49 cross 25, that means I'm saying 50 plus 1 and cross 25. 25 into 50, that means 1250 plus 25, so 1275. These are tricks, but you don't have to write these things. Instead, you have to come to the answer, that is 1225. How you'll do it? I've told you how. There is one more trick to solve this question, that is, if we multiply anything by 25, then basically you have to divide that number by 4. That means 11, 12, we get 1 remainder, so carry 0, 2, and then 220, that means 5, 1225. You have to divide this until you completely divide that number. So these are general calculative tricks. If you want a playlist on calculation, you can tell me. I will make a simple playlist on calculation based on mathematics tricks. Tripsy questions are mostly frequent in prelims. You can easily get 5 to 6 questions using these tricks. Once you get out there, you can easily complete mathematics. So basically what you have to study is mathematics can be categorized into 3 parts. That means arithmetic, advance, and calculation, AAC. One by one tackle it. Once you get through prelims, then you have to increase the level to get out in mains. There is only one mantra, that is concept and practice. No need to watch those long batches lectures of nearly 300 hours. That is completely a scam, a basic coaching scandal. You just need to have right amount of practice and right amount of concept. For concept, you need maximum revision. You can basically allot 1 hour daily as a conceptual session and 2 hours for daily practice session. These are more than enough. Okay, thank you for watching this video. If you want a playlist on calculation, you can tell me. Comment calculation, I will think about it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.